Good evening, everyone. Welcome to our YouTube channel. My name is Megha Sharma, and today we are going to start with management skills, unit first. In previous classes, we studied about the definitions of management. So today we are going to start with the management skills. So join my Telegram group and email me if you have any query regarding the classes or UGC net material, and rate review my channel, and if you have any feedback, share to your friends who can also get benefited from this channel. So conquer your goal this year, resolve 2022 with MV classes, and proceed to the management skills. When we are studying in the previous classes that planning, organizing, leading and controlling the functions of management all are. So to fulfill that function, managers have some skills to fulfill that functions, and managers must have a wide variety of skills, because one manager have only one skill, then they don't fulfill all the stages or the department's requirements of the company or to accomplish the goal. So every managers have some wide variety of skill. So what is a skill? So skill is a ability to do something proficiently, and Professor Robert Gars has bifurcated managerial skills into three subparts. So that the first one is conceptual skills, the second one is human relational skills, and the third one is technical skills. So these skills, conceptual skills, human relational skills, and technical, all have defined some levels. That conceptual skills in which top level management or middle level management fall in that. In human relation, all are important for the top level also, for the middle level also, and the technical skill is mainly for the lower level management. This management skills, which is given by Robert L. Gard in 1974 in his article Skills of an Effective Administrator. That means management skill or managerial skill. So the first one is conceptual skills, which is very important for the managers, particularly for the top management. The next one is human skill, which is needed in all levels of management, at the top level management also, at the middle level management also, and the last one is first line, that is lower level management also. So human skill is important at the every level of the management. The last one is the technical skills that is required particularly for the lower level of management, because they have to do the work, so that is on the lower level of management. So it is first line जिसको management हम कह सकते हैं और lower level of management कह सकते हैं, उनके पास technical skills सबसे ज़्यादा होनी चाहिए. जो human skills है वो all levels of top management के लिए भी होना चाहिए, middle level of management के लिए भी होना चाहिए, एंड जो फर्स्ट लाइन ऑफ मैनेजमेंट है, लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट, उनके लिए भी होना चाहिए. लेकिन जो कंसेप्चुअल स्किल्स है उनके पास टेक्निकल नॉलेज, टेक्निकल स्किल्स बहुत थोड़ा सा. जो कंसेप्चुअल स्किल्स हैं कंसेप्चुअल टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास, उनके पास ह्यूमन स्किल्स तो होनी चाहिए, लेकिन सबसे ज़्यादा कंसेप्चुअल स्किल्स होने चाहिए टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट. So one by one we detail in the next slide that conceptual skill, human skills and technical skills in the upcoming. एक्चुअली जो कंसेप्चुअल स्किल्स होता है वो टॉप मैनेजमेंट के पास होना चाहिए, क्योंकि ऑल दो जो ऑर्गेनाइजेशन है, पर्सन के पास, जो मैनेजर्स के पास एक विजन होना चाहिए टुवर्ड्स द होल ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल, नॉट टू द पर्टिकुलर इंडिविजुअल और नॉट टू द सेल्फ. ऑर्गेनाइजेशन को होल में भी जो भी प्रॉब्लम होगी उसको सिचुएशन को केटर करने के लिए, या जो भी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी उसके लिए, जैसे कि टेकिंग एग्जांपल ऑफ कोविड. सो कोविड में जो भी प्रॉब्लम आया, तो स्टार्टिंग में जो टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट थी उन्होंने ही डिसीजन लिया कि नहीं, हम वर्कर को इन द कंपनी नहीं बुला सकते हैं ड्यू टू द गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस. सो यू हैव टू प्लान अकॉर्डिंगली, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, जिससे कि हमारी जो ग्रोथ है कंपनी की वो रुकी ना हो, कंटिन्यू रहे, और उनकी जो सैलरीज हैं वो भी जाए. सो वो सारे प्रोसीजर्स के साथ अगर हम करेंगे तो ये सारा जो काम होता है वो कंसेप्चुअल स्किल्स के पास होता है.
because if they have certain skills, so they identify the source problem आए कहाँ से, फिर what is the cause of that problem, and thus the managers have the power or the characteristics so to solve that problem that is helpful for the entire organization. So this all were done by the top level of management, and they have the higher conceptual skills so that they create or they amalgamate all the situations, and they have the analytical skills so that they benefited towards the organization. So the next one is human relation skills. Human relation skills are, if you are saying it, it is interpersonal skills also, because managers used to accomplish goal through the use of human resources. उन्हें पता होना चाहिए कि हमें किस तरह से managers, जो human managers हैं, उनको पता होना चाहिए किस तरह से हमें और जो employees हैं उनसे काम कराना है. So manager जो है वो कितने अच्छे से efficiently और effectively जो भी worker काम कर रहे हैं उनसे काम करा सके. इसमें मैनेजर्स का सबसे बड़ा जो रोल है, दे हैव टू कम्युनिकेट प्रॉपरली सो दैट ऑल्दो ऑल मैनेजर्स हैव कम्युनिकेशंस जो है वो प्रॉपर, जो आप कहना चाह रहे हो पर्टिकुलरली वो मैनेजर या वो पर्सन जो है वो सेम चीज़ें ही समझ पा रहा हो या नहीं समझ पा रहा हो. सो दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. एंड ह्यूमन रिलेशन स्किल्स एक ऐसा स्किल है जो तीनों लेवल पे इम्पॉर्टेंट है, एट द टॉप लेवल और एट द मिडिल लेवल और एट द लोअर लेवल. बिकॉज आप किसके साथ कितने अच्छे से बना कर रख रहे हो, आप कितने अच्छे से एक रिलेशंस ऑर्गेनाइजेशन में बना के, किस किसी से झगड़ा करके आप सरवाइव नहीं कर सकते हो कहीं भी. तो इसी वजह से हर पर्सन को एक अच्छे स्किल्स के साथ, एक अच्छे मोटिवेशन स्किल्स के साथ आगे बढ़ना है. तो इसी वजह से जो ह्यूमन रिलेशन है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इंडिविजुअली ग्रो करने के लिए, और एट द होल ऑर्गेनाइजेशन इसलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज अगर आप एक दूसरे से कन्फ्लिक्ट रखोगे तो फिर आप काम नहीं कर सकते, बिकॉज यू नीड someone others to help you. So you can't conflict towards your manager or towards your supervisor or towards your own colleagues. So you have to accomplish their objectives, individual objectives. So you have to communicate effectively with the other human beings. So this is technical skills, and technical skills that means that they have certain skills, just like in this financial statement is, or programming a computer, or designing an office building, or analyzing market. So these all are important, and these all are the technical skills, and these these are very important for the employees to do what they are doing their jobs. Mainly managers to use these type of tools or machines in order to perform the desired activity in the service of the firm or the goods. So there are other skills also from apart from these three skills. So we are going to study those also. So the first one is administrative skills. Administrative skills, that means to running an organization, keeping the firm organized, such as experts in formulation of policies, getting their work done effectively, or you have to coordinate with the functions of my organization, because they have various types of work. So although all the work you have to coordinate or integrate from that. The next one is leadership skill. So from this, every manager, सारे जितने भी मैनेजर हैं कंपनी में, उन्हें लीडरशिप स्किल्स बहुत ज़रूरी है. सो बिकॉज टू इन्फ्लुएंस द पीपल, जो भी ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन जो है वो काम कर रहा है, बीमार है या फिर आना नहीं चाह रहा है ड्यू टू द वर्कलोड, मतलब झूठे बहाने बना रहा है, तो आपके पास लीडरशिप स्किल्स, आपको काम कैसे कराना है, तो वो मैनेजर्स को बहुत अच्छे से आना चाहिए. इसमें हम मोटिवेशनल स्किल्स भी बोल सकते हैं, जो कि लीडरशिप स्किल्स का एक छोटा सा कंपोनेंट है, क्योंकि मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी है मैनेजर्स को. जो भी एम्प्लॉयज़ उनके अंडर काम कर रहे हैं, उनके घर में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जिसकी वजह से वो अच्छे से इफेक्टिवली वर्क नहीं कर पाते हैं इन द ऑर्गेनाइजेशन. So you have to keep motivating that you have to do it, and
उनकी प्रॉब्लम्स को सुनिए. if you have possible, then to solve the problem also. So third one is also relying on that to solve the problem solving skills. So प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स दैट मीन्स कि जो भी मैनेजर्स है बिजनेस इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं, क्योंकि बिजनेस इन्वायरमेंट इज टोटली डायनेमिक. सो यू हैव टू नो हाउ टू, बिकॉज कोई भी जो हेड है वो ये नहीं सुनना चाहेगा कि आपकी प्रॉब्लम्स क्या है. सो आपके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए. कोई भी प्रॉब्लम है उसको आप कितने अच्छे तरीके से सॉल्व कर रहे हैं विदाउट कॉजिंग अनदर प्रॉब्लम. सो कोई भी मैनेजर्स को एनालाइज करना चाहिए सिचुएशन को फर्स्टली कि हम उसमें क्या सोल्यूशन ले सकते हैं, ना कि कोई भी प्रॉब्लम आया नहीं कि आपने तुरंत एक सोल्यूशन बता दिया जो कि मे बी डेंजरस फॉर द आगे चल के वो प्रॉब्लम हो. सो प्रॉब्लम को सिचुएशन को एनालाइज करके एंड टू आइडेंटिफाई द कॉज, कि उसका जो प्रॉब्लम का जो मेन कॉज है उसको एनालाइज करिए. उसके बाद उस अपने स्किल को वहाँ पे लगाइए कि आप किस तरह से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं. Another thing is that you have to keep up to date, because there are various external problems are coming towards the organization. किसी भी फैमिली का प्रॉब्लम है, इंटरनली एम्प्लॉय के, एक्सटर्नल टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम है, बहुत सारे प्रॉब्लम है, तो वो आपको अप टू डेट रखना पड़ेगा. एंड इंटेलिजेंस एंड एक्सपीरियंस टुवर्ड्स योर फील्ड. द फोर्थ वन इज डिसीजन मेकिंग स्किल्स. सो डिसीजन मेकिंग स्किल्स जैसे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स था, आफ्टर दैट डिसीजन मेकिंग स्किल. तो प्रॉब्लम जो आपने सॉल्व करना चाहा तो उसके लिए आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा. विदाउट टेकिंग डिसीजन यू कांट सॉल्व एनीथिंग. So decision making skills is for any manager is a must required skills, and this is actually you say that it is a vital for the managers. So कभी कभी हमें ज़रूरत होती है क्विक डिसीजन मेकिंग की, तो वहाँ पे भी आपको अप्रोप्रिएट डिसीजंस लेने पड़ेंगे फॉर द चेंजेस. एंड सम कोई कोई कभी कभी प्रॉब्लम ये भी आ जाती है कि आपने डिसीजन ले लिया, बाद में वो गलत हो, तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस का जो एनालिसिस है वो करके आपको लेना पड़ेगा. The next one is analytical skill. So analytical skill that means manager जो है वो competent होना चाहिए enough to collect the information, जितना आपको information लेना है, और how to analyze that skill, how to analyze that problem, कि आपने उसको किस तरह से उस problem को analyze किया, और उसके बाद उस analyzed information से आप किस तरह से effective decision ले रहे हो जिससे कि वो problem भी solve हो जाए और कोई प्रॉब्लम मतलब प्रॉफिट लॉस इस तरह की सिचुएशन क्रिएट ना हो. तो एवरी मैनेजर्स हैव एनालिटिकल स्किल. द नेक्स्ट वन इज कम्युनिकेशन स्किल्स. वे आर मतलब हम लोग पहले भी बात कर रहे थे कि कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. सो इस हर लेवल पे मैनेजरियल स्किल्स में कम्युनिकेशन स्किल्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज मैनेजर्स जो है वो पास ऑन जो इंफॉर्मेशन कर रहे हैं वो एक्यूरेटली वही पास ऑन होना चाहिए जो मैनेजर कह रहे हैं टू द लोअर लेवल. बिकॉज इफ देयर इज एनी गैप बिटवीन व्हाट दे वांट टू से एंड व्हाट यू आर हियरिंग और लिसनिंग, so if there is any contradiction between the whole message is wrongfully presented. So communication skills अच्छी होनी चाहिए. टेक्निकल जार्गन्स जो होते हैं उसको अवॉइड करना चाहिए फॉर द मैनेजर्स, बिकॉज जो लोअर लेवल ऑफ मैनेजर्स हैं या जो लोअर लेवल ऑफ पीपल हैं वो ना समझ पाए आपके जो टेक्निकल जार्गन्स हैं. सो कम्युनिकेशन को हमेशा स्मूथ और इफेक्टिव बनाने की कोशिश होनी चाहिए हर मैनेजर को, जिससे कि फ्री फ्लो जो हमारा डिसीजंस हैं वो चलता रहे. द नेक्स्ट वन इज लिसनिंग स्किल. So listening skill that means when you are communicating, and the listening skills is very important for the managers also, not for the worker. We are talking about managers. So listening skills जो है मैनेजर, क्योंकि जो लोअर लेवल ऑफ मैनेज जो पीपल हैं वो अगर कुछ कहना चाह रहे हैं मैनेजर से, उनके कुछ इश्यूज हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो वो अगर कुछ कहना चाह रहे हैं तो उनको मैनेजर्स दे हैव टू एक्सेप्ट और दे आर रेडी टू हियर दैट. So managers are also capability to receive the message accurately and readiness of the manager, so that he also interpret or he or she or also interpret the message accurately, that what lower level of management say to the managers. Because क्योंकि प्रॉब्लम क्या होती है, मैनेजर्स जो होते हैं एक्चुअली हम ये सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं
एक्चुअली जो लिसनिंग स्किल्स है मैनेजर्स की वो बहुत कंपनीज में ख़राब पाई जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग होते हैं वो डरे होते हैं, और अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम भी आ रही होती है तो वो मैनेजर्स को नहीं कहते हैं, और उसकी वजह से खास करके जो मशीनरी वाली जो प्रॉब्लम होती है वहाँ पे ये इश्यूज आते हैं कि अगर कोई मशीन है वो ख़राब हो गई है बट वो बता नहीं रहे हैं और उस ख़राब मशीन को ही रोटेट कर रहे हैं, मतलब चला रहे हैं, तो उससे इश्यूज है कि मे बी वो कुछ ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं जो कि वर्कर के लिए अच्छी ना हो, जो कि वर्कर के लिए अच्छी ना हो, और उसकी वजह से क्या होगा कि जो वर्कर हैं उनको फिर बाद में वो प्रॉब्लम झेलनी पड़ सकती है। The next one is time management skill. So the time management skills is also required for every manager to drive the organization. Because to reach the destination in the stipulated time, if अगर मैनेजर ही टाइमली नहीं पहुंचेगा ऑर्गेनाइजेशन में, तो फिर और जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उन पे तो वो चीज़ इफेक्ट करेगा। आप ही सर टाइम पे नहीं आते हैं तो हम कैसे आए? तो ये भी एक है। और अदर टाइम मैनेजमेंट स्किल्स में हम बोल सकते हैं आपको एक डेडलाइन मीट करना है, मैनेजर से आपका एक्यूरेट नहीं है, तो वो प्रॉब्लम फिर सबके लिए कोऑर्डिनेट करता है। If you are in, we are talking about in functions of management, planning, organizing, so you are making a deadline for that to complete this assignment. You are making this 30 जून, आपने इसके लिए एक टाइम बता दिया कि ये काम हमें इतने जून तक या फैब तक कर लेना है। लेकिन उस काम को करने के लिए अगर आपने प्लानिंग जो की है कि उस पूरे काम को करने के लिए प्लानिंग में आपने किया कि पर्टिकुलर जो हमारा ये काम है उसको हमें 10 दिन में करना है, आपने अगर वही काम 10 दिन में नहीं किया तो उससे क्या इशू होगा कि नेक्स्ट जो काम होगा वो भी आपका फिर डिले हो जाएगा। तो दैट कॉजेज ऑल द एंड जो आपका डेडलाइन था 30 का वो कभी भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। So we are going move towards your last skills, that is conflict management skill. Conflict management skills हर मैनेजर्स को बहुत ही अच्छे से आनी चाहिए, बिकॉज ये जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप प्रॉब्लम पे हमेशा फोकस करोगे तो यू डोंट गेट एनी सॉल्यूशंस। So give solutions to the problem every managers have, and build harmonious relations with the stakeholders or with the employees, so that you lead the successful organization, and that is very much important for accomplish the goals of the organization. The significance of managerial skills for the organization, which is very important, because हमने managerial skills सारी जो पढ़ी वो तो important है ही, लेकिन वो क्यों important है? So first one is easy administration. Easy administration, that means dealing an organization, जो भी run हो रही है organization उसमें एक आराम से जो काम है वो चलती रहे, जिसके लिए मैनेजर्स को मैनेजरियल स्किल्स जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। The second one is cordial relationship between various levels of management. Various levels of management, that is top level of management, lower level and the middle one. So इन तीनों के बीच में cordial relationship होना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि जो flow of organization है वो easy way में चलता रहे। Optimum utilization of resources, it is very important, because if managers have don't skilled at how to require or how to utilize the resources which are available in the organization, so इससे क्या होगा, बहुत ज़्यादा losses होंगे, because आपके पास employees हैं and आपने efficient और effective way में काम नहीं कराया, तो उससे क्या होगा कि जो हमारे profit जो ज़्यादा हो सकती थी वो नहीं हो पाएंगी, and you can't achieve your vision. So the next one is achievement of organizational goal due to effective communication, motivation, leadership skills, conflict management skills, time management skills. These all are important. Time management skills तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर time management skills नहीं होंगी तो आप ये सारे काम नहीं कर सकते हो, क्योंकि time management skills में आपने aim को set किया, एक टास्क को रिक्वायर जो भी था उसको कंप्लीट करने के लिए आपने टाइम अलॉट किए, फिर उसको ऑर्गेनाइज किया, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द टाइम मैनेजमेंट, एंड विदाउट वेस्टिंग योर टाइम और अननेसेसरी एक्टिविटीज़, ये भी मैनेजर को ही अकॉम्प्लिश करनी है कि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो कहीं भी, और स्मूथली जो है वो चलता रहे। रिटेंशन ऑफ क्वालिटी एंड कॉम्पिटेंट रिसोर्सेज, इट इज़ ऑल्सो वेरी मच इम्पॉर्टेंट, बिकॉज मैनेजर्स जो हैं उनके पास इंटरपर्सनल स्किल्स जो हैं वो बहुत अच्छे होने चाहिए, जिससे कि वो अच्छे रिलेशंस बना सके विद द वर्कर, विद द स्टेक होल्डर्स, विद द टॉप मैनेजमेंट, एंड
that all should be go towards the enhancement of the productivity of the organization. That is very much important. So हम यहीं पे end कर रहे हैं, and the next we will go through the levels of management in the next class. Some of the questions which can be asked from the previous year question paper. So this question, who has given the system theory of organization? एक्चुअली मैंने ये क्वेश्चन प्रीवियस जो स्लाइड्स थी मेरी प्रीवियस वीडियोस जो थी उसमें मैंने दी थी कि आप लोग इसको देखेंगे और इसका आंसर बताएंगे. सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज चेस्टर बर्नार्ड. He gave the system theory of organization. Moving toward the next questions. So, which level of management deal with the formulation of policies? हमने इतने सारे क्वेश्चन किए कि कौन सा जो लेवल है मैनेजमेंट का वो फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज से डील करता है. सो द आंसर इज थर्ड. टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट जो है वो फॉर्मुलेशंस ऑफ पॉलिसीज से डील करता है और इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं. Moving towards the next question. So Professor Card has divided managerial skills into, the first one is conceptual, analytical and technical. Conceptual, analytical and the human relation. Technical, human relation and the conceptual. And the fourth one is technical, analytical and social. So the answer of this question is third one, technical skills. Human relation, which is in middle level of management, technical is in lower level, and the conceptual is in top level of management, which is given by Professor Karj. The next question is, the lower level management possesses which skills? So, which skills? The first one is conceptual, second was in interpersonal, the third one is technical skills, and none of these. Fourth one is, so the maximum skills which is required for the lower level of management, which is technical skills. So we meet in the next session. तब तक के लिए bye. And if you have any query regarding all the skills, so you can freely ask me in the comment sections. Subscribe my channel, like this video. Thank you.